वेलकम बैक। और आपने शायद मीडिया पे ये खबर भी देखी होगी, आजकल काफ़ी इस पे तस्करा हो रहा है और बल्कि काफ़ी अरसे से हम बात करते हैं गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की, जो कि सिंध में मौजूद है। और जब आप कराची जैसे शहर में होते हैं या अगर आपको मौका नहीं मिला और पार्ट्स ऑफ सिंध में ट्रैवल करने का या किसी और प्रोविंस में, तो आप समझते हैं कि जी एक छोटे इलाके में, कंपेरेटिवली एक छोटे इलाके में किस तरह से इतनी बड़ी मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है। बट सीइंग इज बिलीविंग, इफ़ यू गो देयर आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी फैसिलिटी है। और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें बड़े फ़ख्र महसूस होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट हो, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो और न जाने कौन कौन से, बल्कि अब कैंसर ट्रीटमेंट के हवाले से बड़ी रिसर्च वहाँ पर हो रही है। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े जो हेल्थ इश्यूज़ हैं रिजॉल्व किए जा रहे हैं गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। आज हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका एक अमेरिकन ने गूगल पे सर्च किया या क्या किया, उनकी स्टोरी वो बताएंगी। गॉल ब्लैडर का उनको प्रॉब्लम था और वो किस तरह का प्रॉब्लम था, क्या रिजॉल्व हुआ, और वो ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका ट्रैवल करके पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में भी वो गई हैं गंबट और वहाँ जाके उन्होंने इलाज करवाया। सो वी हैव विद अस जूली नीमन. Hello Julie, assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? I am good and you look perfect. Oh, thank you so very much. You're lovely yourself. Thank you. Thank you. So, tell us about the gallbladder disease that you were having and how did you, get to know about the hospital? I ended up in Karachi and I ended up in the ER with severe pains, and at first I thought it was my kidneys because the location of the pain, it was in my right rib cage and towards the back. And so I immediately went to the kidney hospital and they're like, no, it's your gallbladder and your liver. And so I looked into what to do. They gave me a few referrals, but the Gambit Institute had everything that I needed. And so what was actually happening to your gallbladder and liver? The liver, you needed a transplant or there was some major issue? The gallbladder had gallbladder stones, and to the point where I believe they had to remove the entire gallbladder. So it was inflamed is what they wrote on the surgical notes. Obviously I was asleep during the procedure, so I didn't physically see I just want to know about the disease, that how magnificent or how magnanimous it turned. It was really life endangering. And then the liver issue, I wasn't sure what stage it was at. I knew that there was an issue, but I wasn't sure what stage it's at. Luckily, it's at stage 1. So hopefully that, inshallah, it can be reversed. But the gallbladder did have to have surgery, and it was an immediate need surgery. And so luckily, the Gambit Institute is an amazing jewel in Pakistan, and it had all the facilities. Why did you choose Pakistan in the first place? Because I tell you, the people, the affluent people over here, they prefer to go out of the country for their treatment. You must have heard in the news as well, and you must have seen. You know how many doctors we have from Pakistan in the United States? There's tons of doctors that go and they practice. But you chose otherwise. You preferred to come to Pakistan. So what was the reason behind it? It's the quality of care. In my country, it would take years on a transplant wait list for a lot of people to obtain a liver or kidney transplant, and sometimes they never can actually receive those transplants that are needed. When I was there, I saw young children going in for a liver transplant, and it's very disheartening knowing that in my country you'd be put on a waiting list that the insurance company would be in control of for you to get your surgery. And it's really a painstaking process over there. I think that Gambit has a not-for-profit approach, and it's the government that's running that, which is amazing. The Singh government did an amazing job of putting that facility together with Dr. Batty. Because whenever we watch movies, Hollywood movies, or Netflix these days, most popular, that's the most popular. So over there, when we see, medical care in America, we get inspired that see how they are concerned about people and how readily they are addressing to their problems. But the picture is otherwise. The picture is otherwise. Unfortunately, whenever you have a for-profit system, then the patient quality and care lacks. In my country, I was told by a number of doctors, they have 15-minute increments with each and every patient. So if a patient's running 5 minutes late, then there's 10 minutes and less time for the rest of the patients. They bill the insurance companies, and they're not getting a huge amount for that. Then they're required to carry insurance, and there's a lot of red tape to cut through. That's why it would take years
in my country versus, you know, months or days even in this country. And so for... So when did you land in Pakistan? I've been here for 2 years. So For 2 years? I've been here for 2 years. Yeah, so I've been here So finally it's your time that you would be able to go back. Actually, I was going to fly to England on the 3rd of this past month, and my husband's like, no, stay. What is the reason? I don't know, but it ended up being a life-saving, you know, please stay. So, you know, if I didn't stay, then who knows what would have happened. Yeah. Having that surgery outside the country is very expensive. Here, let me translate it for the audience as well. Of course. अच्छा, ये जो जितनी मेरी बात हुई आप लोगों को भी शायद समझ में आ ही गई होगी। ये कहती हैं कि जूली ने ये कहा कि जी जो अमेरिका में ट्रीटमेंट होती है उनमें बहुत टाइम लगता है और उसमें इंश्योरेंस कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं हो पाता तो जाहिर है आपकी ट्रीटमेंट वैसे नहीं हो पाती। वैसे ये उर्दू से थोड़ी थोड़ी वाकफियत रखती हैं, तो जो मैं बोल रही हूँ वो इनकी समझ में आ रहा होगा। बहरहाल तो इनका ये कहना था कि पाकिस्तान में मैं बस आई हूँ और मेरा ये जो प्रॉब्लम था, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम बन चुका था इनका, गॉल ब्लैडर का और लिवर का और ये सब जो मिक्सचर था। सो अमेरिका में रहते हुए लोगों को हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फ़ौरन एड्रेस नहीं कर पाते। डॉक्टर्स का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो उतना ही टाइम पेशेंट को दे रहे होते हैं, आप एक वेटिंग लिस्ट पे होते हैं, कुछ लोग दुनिया से चले भी जाते हैं वेट करते करते। सो ये चीज़ें हम इसलिए नहीं हाईलाइट करें कि हम कहीं की बुराई करना चाहते हैं और अपनी बड़ाई करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जो जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो हमें भी अपनी चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए। और क्योंकि गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात हो रही है, तो वहाँ के डॉक्टर जिनकी अपनी ही बड़ी सक्सेस स्टोरी है, डॉक्टर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम गंबट। इनकी स्टोरी तो मैं पर्सनली भी देख चुकी हूँ, आंखों देखा मेरा हाल है कि कहाँ इन्होंने एक डिस्पेंसरी से शुरू किया था और आज इतनी बड़ी फैसिलिटी बनाई है। मुफ्त इलाज है वहाँ पर, पाकिस्तान से दुनिया से जहाँ कहीं से भी पेशेंट आते हैं मुफ्त इलाज किया जाता है। और सिंध गवर्नमेंट को भी इस बात में प्रेस करना चाहिए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर भट्टी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी। वैसे जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा। मैडम आप भी ठीक होंगी? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी उठा पाकिस्तान की जानिब से और GTV की जानिब से आपको मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि आपने एक और कारनामा इस तरह से किया है कि अमेरिकन सिटीजन्स भी अगर ये देखते हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ की फैसिलिटी मौजूद है तो ये एक बड़ी चीज़ है। और मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ, इसके बाद मैं आपका आंसर लूँगी कि जब ये फैसिलिटी बनाई जा रही थी, जब इस हॉस्पिटल को बड़ा किया जा रहा था, तो डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी का अपना बड़ा इनिशिएटिव है। इन्होंने जर्मनी से डॉक्टर्स बुलाए थे और जिस तरह से इन्होंने सेटअप किया है अस्पताल में वो किसी भी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल के बराबर है। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखें हमने तो डिस्पेंसरी से लेके तारका हॉस्पिटल से इंस्टीट्यूट बनाया, अभी तो हमारी जो है ना हेल्थ सिटी बन गया है। जी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि हेल्थ सिटी बना रहे हैं। जी अनाउंसमेंट की थी हमारी सिंध गवर्नमेंट ने, गंबट इज द हेल्थ सिटी। इंशाल्लाह देखें हमने बड़ी कोशिश की। जब हम ये लिवर का कर रहे थे तो हमने जर्मन टीम से 2 साल का एग्रीमेंट किया था। उनको ले आए, उन्हें एस्टेब्लिश किया, हमारे OTs और ICUs उनने बनवाए, उनके अंडर सुपर में मैं था उनके साथ, और सिंध गवर्नमेंट ने फंड्स दिए थे हमें, तो बहुत अच्छा बन गया। अब जो भी अदारा हमारा बन रहा है वो जर्मन यूरोपियन स्टैंडर्ड का बन रहा है और बहुत अच्छा बन रहा है। कैंसर ट्रीटमेंट्स पे भी आप भट्टी साहब कैंसर ट्रीटमेंट्स पे भी काम कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ नहीं, वो मैं बताता हूँ ना, हमारे पास जो है अभी टोटल जो हेल्थ फैसिलिटीज है फ्रॉम बेसिक तो टर्शरी तक है हमारा, और स्पेशलाइज सर्विसेज भी हैं जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, और कैंसर का भी हम है। अभी प्रोटॉन बीम थेरापी भी हम लेके आ रहे हैं जो बहुत एडवांस है कंट्रीज में, यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज में, वो भी हमारे पास आ रही है। और हमें जो भी है इधर मैं तो कहता हूँ वो हम इसको छोटा सिंगापुर बनाना चाहते हैं बहुत, और गवर्नमेंट भी बड़ा इंटरेस्ट ले रही है और बड़ा पोटेंशियल है गंबट। जी पोटेंशियल है, तो आप देखिए ना पोटेंशियल तो डॉक्टर साहब पोटेंशियल तो ऐसे नजर आता है कि जब जूली ने अमेरिका में बैठ के सोचा कि मैं पाकिस्तान में और गंबट में इलाज करवाऊंगी, आपको ये कैसा महसूस हुआ? क्योंकि दूसरे सूबों से तो लोग आ रहे हैं, आप बताते रहते थे, आपके साथ बड़े प्रोग्राम मैंने पहले भी किए हैं, लेकिन अमेरिका से किसी का आना, पेशेंट का आना, ये आपको कैसा महसूस हुआ?
देखिए हमारा विजन बहुत आगे है। कुछ साल पहले मेरे पास यूएसए के एम्बेसडर आए थे और कॉन्सल जनरल आए थे, तो उनका ये कहना था तो आपका जरा ऐसा बन रहा है, तो एम्बेसडर साहब ने कहा था जब मैं भी अगर किराए इधर ही पाकिस्तान में कुछ सिक हुआ तो मैं आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराऊंगा। ये आज एग्जाम्पल है, तो उनका एक समझ लें वो आ गई लेडी हमारी जो जूली है आ गई और उनका ट्रीटमेंट कर दिया। अभी अमेरिकन तो बहुत आएंगे और यूरोपियन भी बहुत आएंगे हमारे पास, और इसको जो है ना हमारा सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा टेकअप किया हुआ है और फील कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे जा रहा है, अभी पाकिस्तान के तो सारे कोने कोने से केस आ रहे हैं और आप देख रही हैं ये यूरोपियन अमेरिकन आई है कितना तारीफ कर रही है और कितनी फैसिलिटीज मिल रही है इनको। हमारा है तो एक टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो जो पेशेंट आए उसको जल्दी जल्दी उसका जो है ट्रीटमेंट हो जाए, वरना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आते आते लेट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यही बात है जी पैसा, हम कहते हैं ये फ्री ऑफ कास्ट है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसे न होने की वजह से वो इलाज नहीं करा सकते। जब इलाज नहीं करा सकते तो बेचारे ऐसे ही कहीं मर जाते हैं, कुछ होता है, तो हम टाइम आपके पास सारी सर्जरीज और सारी मेडिसिन और सारा प्रोसीजर ओपीडी से लेकर सर्जरी और बाद में भी जो केयर होती है वो सब फ्री है? यस, टोटली फ्री। सारी एक ईयर तक करते रहते हैं, जो ट्रांसप्लांट करते हैं उनको तो जूली भी कुछ कहना चाहती हैं। जूली वांट्स टू ऐड अप समथिंग। डॉक्टर साहब जी, जूली वांट्स टू ऐड इन समथिंग। जी, I just wanted to thank him for doing all of this. It's truly amazing that the government has actually put that together for everyone and realized that we're all humans and in situations where we have serious life endangering things going on with our bodies, that there's people like him that will take care of everything, and Tabish and him were my really angels in disguise. Yeah. So when you went there the very first time, how did you feel? Were you concerned about anything? Did you have something already in your mind? Anything? No, I wasn't concerned about anything. The facility is very nice itself. Tabish was the coordinator that ended up coordinating the whole and what surgery. about the doctors? And did they explain it to you? Amazing. And yes, they explained everything. They're very highly trained. It's a world-class facility. It is very nice, and they're very professional, and they do a very good job in taking care of patients. And there. what about your stay in Pakistan? It's been 2 years now. It's your country as well now. But what is your experience throughout? My experience has been there are a lot of very nice people with very kind hearts, like the doctor. And it's been a very nice experience. I've known the culture for over 20 years now, so it's been a long time that I've had friends from here. But actually being here is a totally different experience. So I have thoroughly enjoyed my stay here, and it feels like home. You have been eating most of the foods that we offer? I love Pakistani foods. My favorite place is Darbar in San Francisco. I used to go there all the time. It's owned by a Pakistani couple there. So if anyone ever goes, I would suggest that place. It's amazing. It's a little hole in the wall, but it's great. Yeah. So I love Pakistani food even before coming here. And you are liking everything over here. So everything, the culture, the dress, you know, it's different than my culture. Yes. But that's how you dress up over there as well. You have told me that that's how you dress up. Yeah, I typically we cover your head. Yeah, okay. So it's wearing the albaya and then the hijab. But it's a little different in certain areas of my country. Yeah. Any message, anything that you would want to say to Dr. Bhatti directly? Dr. Bhatti, thank you so very much for starting all of this. You truly have been a lifesaver in this situation, and I'm truly grateful and blessed that Allah has provided, these services with you in order to help all these people. It's an amazing feat, and it truly shows how dedicated and kind-hearted you are to. He is. क्योंकि ये बात मैं इसलिए it's not only for TV purpose, क्योंकि Dr. Bhatti को मैं personally बहुत अरसे से देख रही हूँ,
हूँ, बहुत अरसे से जानती हूँ, और जब इतनी ज़्यादा तरक्की और कामयाबी नहीं हुई थी तब से जानती हूँ, जब से वो लगे हुए हैं और जब से वो रेस्ट नहीं करते हैं जितना मैंने देखा है, और कुछ और नहीं करते हैं सिवाय इसके कि हॉस्पिटल में लोगों की मदद होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह आपने प्रूव किया है कि आप अनस्टॉपेबल हैं, और आपकी एक कामयाबी होती है तो आप दूसरी के पीछे शुरू हो जाते हैं कि अब ये हमने हासिल करना है, वो होती है तो आप तीसरी के पीछे। मैंने आपको ये नहीं देखा कि आप इत्मीनान से बैठ गए हों कि बस अब बस हो गया, काफ़ी हो गया। तो अभी आपकी नज़र कहाँ है, कहाँ तक जाना है? जैसे कि आपने बताया हमारा विजन बड़ा ब्रॉड है। अभी देखें, हमारा विद इन फ्यू मंथ्स हमारा वो लंग केयर सेंटर बन रहा है लीडिंग टू लंग ट्रांसप्लांट। अच्छा। तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा है और कंट्रीज में भी चंद जगहों पे हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये साल हमारा वो क्योंकि कोरोना जो कोविड हुआ तो उसमें हमारे लंग्स बड़े अफेक्टेड होते थे। तो हमारा अभी इसके ऊपर है सारा अभी रिसर्च भी इसमें कर रहे हैं, और लंग ट्रांसप्लांट जो है वो इंशाल्लाह इस साल शुरू करेंगे। सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेट करिए हमारे साथ, और खासतौर हमारी जो मैडम है हेल्थ मिनिस्टर, वो तो बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। उसके बाद हमारे वजीर आला साहब तो वो भी बड़ा, क्योंकि टेक्निकल बने और हमारी और लंग ट्रांसप्लांट तो बहुत फिर हमारा हमारा चीफ मिनिस्टर जो इंजीनियर है, तो वो बिल्ड करना वो आता है, मैडम को हेल्थ लुक आफ्टर करनी आती है, तो दोनों टेक्निकल बने। तो हमें बड़ा वो फैसिलिटेट इसलिए करे, दे प्रोफेशनल लोग हैं, तो वो बड़ा हमें हेल्प करते हैं और समझते हैं बात को, और हमें उनने समझ लिया है और हम उनसे काम ले रहे हैं। तो ये बड़ा हमारा खुशाइन चीज है। तो इंशाल्लाह आप, क्योंकि मैं पैदा इधर हुआ इसी धरती पे, नहीं बड़ा वैसे भी हमारा वतन है। जी जी, बहुत जबरदस्त बनाई। तो ये अब गंबट से हमारे इधर है। गंबट के अलावा कराची में भी अब आप इसके क्लिनिक्स शुरू कर रहे हैं ना? हाँ, अब हम मलीर में कर रहे हैं जी, उधर। वो हम एक तो हम रैपिड रिस्पांस बना रहे हैं उधर, सही, और फिर एक नया प्रोजेक्ट ले आ रहे हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज दूंगा पाकिस्तान। चलें, आप हमें सरप्राइज दीजिएगा, हमारे फोरम से वो सरप्राइज आना चाहिए पहले, ठीक है? हाँ जी, हम बताएंगे वो सरप्राइज क्या आने जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप इंशाल्लाह वो बड़ी सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह आपको, हमारे नेशन को, वो नेशन की प्राइड होगी इंशाल्लाह। नजदीक हम वो भी कर रहे हैं। ओके, जो अभी हमारा अभी स्टडी करें, उसके ऊपर रिसर्च करें और उसको लॉन्च करेंगे जरूर इंशाल्लाह ताला। So Julie, what about your friends and family back there? What are they thinking about the overall thing that you have gone through? Are they surprised? Because whenever we talk about Pakistan, there are distressing news most of the time, and people are taking it in a different perspective. So when you tell them your story, what is their reaction? Are they surprised? I think that they're really grateful that you guys did this and offer these services. You're right, there is a huge disconnect, I think, and I think, you know, both cultures, you know, have opened up a lot, and I think there's room to open up even more. There is news, you know, we have things in the U.S. too that go on. It's not free of all problems, you know, and it's always a situation. But at this part of the world, we believe that everything that's happening in the U.S. is just amazing. It's like the grass and we are far behind that. Yeah, no, it's the grass is always greener on the other side. on the other side. No, but exactly. to really experience it, you must go. You know, I think the medical facilities and what Dr. Bhatti is actually doing is the model that we all should follow for the entire world, not just for this country. What specifically is the interesting point for yourself in this model? In this model, the fact that the government is actually subsidizing him so he can run a hospital that is a nonprofit, that's free of cost, that is high quality medical care with excellent doctors who are highly skilled. That is what we need to be focusing on. We need to be focusing on saving people's lives, not the insurance bottom line. And when you focus on patient care, I think that it fixes a lot of problems with society. I think that the problem is when you make a for-profit medical system, then of course they're going to cut all the costs they can because you're wanting to return a profit to the shareholders. And so the issue is that in this country they're not doing that. In a lot of countries they're not doing that.
And everyone thinks it's so much Apparently, better. it seems very interesting. Apparently, it seems that they are giving a lot of care, but when you go deep down into it, there is this painstaking It's a process. small percentage that is actually yeah. getting the adequate care needed. The rest of the patients are not thoroughly, I think, looked at. There's a lot of room for improvement, and I know that a lot of people in my government have tried to do that. However, it turns into a socialized medicine situation, and people are reluctant to change, and I think that they should not be. I think that this system does work. Yeah, so they are not looking into it. Are they not working on it to improve the system? I think that we had... Or it varies from hospital to hospital? It's not so much varying from hospital to hospital. It does vary from state to state as far as insurance coverage. But from hospital to hospital is similar standards. However, I think the last thing that was done for the United States was Obamacare. And it really raised a lot of premiums for a lot of people that couldn't afford the basic necessities as is. So it was passed as a tax. And I think that people thought that we would all be this great health care system, and we're finding out that it's not working the way it was intended to work or the way that it was presented to work. So I think there's room for improvement and growth, and this is an ideal model of how it should be. Very nice. Feeling so proud of it, and coming from it is a prestige. I'm amazed. Thank you so much, Julie, that you have taken out time to be part of our show, and for all the kind words that you have said for Pakistan and for games specifically. It has been immense pleasure to talk to you and to be with you. You too. Thank you very much for having me. Thank you. And Dr. साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ मौजूद रहे और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी. बड़ी मेहरबानी. Thank you. So with that, हमें एक ब्रेक यहाँ पर लेना है. ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA में हमारी एक लड़की ने जाके जी बड़ा नाम बनाया है. कहाँ गई थी वो, कौन सा कंपटीशन हुआ था और क्या जीत कर आई हैं, ये सब हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद.